Hello everyone. Children, in the previous video we have discussed about internal and external fertilization. And there we have discussed that whenever there is external fertilization, those organisms which reproduce by external fertilization, they always produce large number of egg and sperm as compared to internal fertilization. Now what is the reason behind it that we have discussed yesterday, and here they have also mentioned that what is the reason. In case of external fertilization, both egg as well as sperm, they are released in the water. They are released in the water, and in the water there are chances that those eggs can be carried by the water movement, they can be carried by the wind, or can be carried by the rainfall, and there can be less chances of fusion of egg and sperm. That's why they are already produced in large numbers, so that at least some of them can fuse together. Clear? After that, there are various kind of animals in the water, so some of the egg and sperm may be eaten by other animals in the pond and river. That's why the egg, every egg and every sperm is not fusing there to produce a zygote. Very few of them will get a chance to fuse together to form a zygote. That is the reason that they produce large number of egg and sperm. Clear? Okay. So this was about external and internal fertilization. The next topic which we will discuss today is development of embryo. Now you should know what happened after fertilization. As I told, in fertilization मेल produces, female produces egg जिसको ovum भी बोलते हैं, and male produces sperm. And both egg and sperm, they meet together. If it is internal fertilization, they meet inside the body of female. If there is external fertilization, they meet outside the body of female. And by their meeting, they form a structure, single cell, and that single cell is known as zygote. Children, keep it in mind, every one of us, we are multicellular organism. हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल हैं, लेकिन हम सब ने अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से शुरू करी है, एंड दैट सिंगल सेल इज कॉल्ड अ zygote. Is it clear? So this zygote, if we talk about human, here actually we are discussing in detail about human. So if we talk about human, then in case of human, this fertilization is internal, which take place in the fallopian tube, and after fertilization zygote is formed. This is the zygote. So where do it form? It is formed in the fallopian tube. This is fallopian tube. Here the egg meet with the sperm and they fuses together and form a single cell structure, and this single cell structure is now called zygote. And what happen afterwards? Immediate after its formation, ये जो zygote है ये divide करने लग जाता है. एक सेल से दो सेल बन जाते हैं, दो से चार. In this way it keep on dividing, and it form a ball of cell. Clear? Now what happened further? Now the cell then begin to form group and start differentiating into different tissue and organs of the body. अब क्या हुआ? पहले एक सिंगल सेल था जिसको हमने एम्ब्रियो बोला, zygote बोला, फिर ये zygote डिवाइड हुआ and we got a group of cell. Now what happened? इन group of cells में से कुछ सेल मिलकर एक टिश्यू बनाया, दूसरे सेल्स ने दूसरा टिश्यू बनाया, तीसरे ने अलग टिश्यू बनाया. इन दिस वे डिफरेंट टिश्यू ज्वाइन टुगेदर दे फॉर्म ऑर्गन. तो धीरे धीरे ये जो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर था zygote, ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, और उस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में वी हैव डिफरेंट ऑर्गन्स ऑल्सो. एंड एट दिस स्टेज दिस डेवलपिंग zygote is known as embryo. What it is called? It is called embryo at the stage. So what is embryo? It is given here. The embryo is the developmental stage of zygote in which there are present different tissue and organs. That is called embryo. We can say embryo is a multicellular structure which is formed by the division of zygote, and it possesses different tissues and organ. Clear? Afterwards, what happened to the embryo? As I told you that the zygote is formed in the fertilization take place in the fallopian tube. You know it very well. This is fallopian tube here. This is fallopian tube.
here, and here is another fallopian tube. उससे नीचे क्या होता है? uterus. This is uterus here. Clear? Now, as you know, fertilization take place here in the fallopian tube. उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बना उसको जाइगोट बोला. फिर वो जाइगोट डिवाइड करता गया, ग्रुप ऑफ सेल बन गया जिसमें डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ थे और ऑर्गन्स भी थे, एंड वी कॉल इट एम्ब्रियो. नाउ ग्रेजुअली दिस एम्ब्रियो शिफ्टेड टुवर्ड्स द यूट्रस, और धीरे धीरे ये यूट्रस की वॉल के साथ चिपक जाता है. एंड दिस एक्ट of fixing of embryo to the wall of uterus is called implantation. इस process को बोलते हैं implantation. तो what is implantation? Attaching of embryo with the wall of uterus. And once implantation take place, एक बार जब embryo uterus की wall के साथ चिपक जाता है, then the female is said to be pregnant. At this time, female is called a pregnant female. Clear? Now what happened? The embryo get embedded in the wall of uterus and its further growth take place there. Embryo continue to grow in the uterus. It gradually develops. You can have a look here in this diagram, very beautiful it is shown. This was ovary here, this is ovary, and this is fallopian tube. You can see in the fallopian tube they have shown this is the zygote. ये zygote, ये देखो ये ovum निकला, ये ovum sperm के साथ fertilize करा. fertilize होने के बाद we got the zygote. अब zygote divide हो रहा है, एक सेल से दो सेल बन गए, बहुत सारे सेल बन गए, again it is dividing and we got a bunch of cell. This bunch of cell is called actually embryo. This was embryo. Now what happened? अब gradually the embryo is coming down. कहाँ आता जा रहा है ये embryo? This is coming in the uterus. This is uterus here. It is coming in the uterus and is embedding in the wall of uterus की wall में धीरे धीरे धस जाएगा और इसी के साथ चिपक जाएगा. This is called implantation act. Clear? Okay. Now further what happened? Yeah, as we studied that gradually the embryo develops. फिर क्या होते हैं? Some of the cells of an embryo, they start functioning as hands, some for legs, head, eyes, ear, etc. And in this way, the stage of embryo in which all the body part, अब एक stage ऐसी आएगी जब embryo में जो multi cellular cells थे, बहुत सारे जो cells थे, उनमें से कई cells ने heart बनाया, कईयों ने eyes बनाई, कईयों ने lungs का काम करने लगे, कई ear का, कई nose का, और धीरे धीरे एक stage ऐसी आएगी जब एक ऐसा organism बन जाएगा जिसमें body के सारे parts बन जाएंगे. Eye, nose, legs, heart, everything will be there. And at this time, we don't call it embryo and it is known as fetus at this time. What it is? It is called fetus. तो क्या चीज़ होती है fetus? The stage of embryo in which all the body parts can be identified. Now it is called fetus. And when the development of fetus is complete, mother give birth to the baby. Is it clear, children? And जब fetus की पूरी development हो जाती है, in case of human it take 9 months to develop a fully mature fetus. Or after its fully maturation, it is released out from the vagina of the mother. And the act of this we call in normal ways, in normal language we call it delivery of a child, how a mother deliver a child. But scientifically it is known as parturition. तो parturition क्या होता है? Parturition is the act of delivering a fully matured fetus. Always keep it in a mind, जब तक fetus uterus में है तब तक हम उसको fetus बोलते हैं. Immediately after the birth, जैसे ही वो uterus से बाहर निकला, vagina से बाहर निकला, we call that fetus as baby or newborn baby. Is it clear, children? So these are the different terms. This is how actually development occur. तो कैसे कैसे होती है डेवलपमेंट? पहले एम्ब्रियो बनता है, सबसे पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट डिवाइड करता है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है विच इज़ कॉल्ड एम्ब्रियो. फिर एम्ब्रियो जो है वो शिफ्ट हो जाता है यूट्रस में, यूट्रस की वॉल के साथ चिपक जाता है, दैट वी कॉल इम्प्लांटेशन. ठीक है, इम्प्लांटेशन बोलते हैं हम उस एक्ट को. फिर क्या होता है? धीरे धीरे एम्ब्रियो ग्रो करने लग जाता है एंड दैट एम्ब्रियो ग्रोज इनटू the different body parts start appearing in the embryo,
and we call it fetus. And when the fetus is fully mature, it is delivered out from the vagina of the mother. You can see this is a fetus which is fully developed, so it will come out from the vagina of the mother. Is that clear? So if we talk about internal fertilization, then in internal fertilization all these stages, that is fertilization and development of the fetus, take place within the uterus. ठीक है, कहाँ होती है डेवलपमेंट? इट टेक प्लेस इन द यूट्रस ऑफ द मदर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में. बट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन भी बाहर और डेवलपमेंट भी बाहर. लेकिन कुछ इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऐसी होती है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन तो अंदर है, ठीक है, बट डेवलपमेंट इज आउटसाइड. एग्जाम्पल इज hen. Hen is the example of that. You know hen every one of you have seen. hen के केस में क्या होता है? hen produces egg बनाती है, वो ओवा बनाती है. This egg is produced in the female reproductive system of hen. फिर वहाँ पे जो मेल hen है, कॉक है, it releases sperm in the reproductive tract of hen, female hen, and egg and sperm they meet together inside the body to form zygote. तो फर्टिलाइजेशन कैसी है? इंटरनल. कहाँ हो रही है? hen की बॉडी के अंदर. बट एक बार जब जाइगोट बन गया, फिर हमें पता है जाइगोट डिवाइड करता है, क्या बनाता है? ग्रुप ऑफ सेल विच वी कॉल एज एम्ब्रियो. तो वहाँ पे क्या होता है? इस एम्ब्रियो के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लग जाती है जिसको हम एग शेल बोलते हैं, और अंदर ये एम्ब्रियो धीरे धीरे ग्रो करने लग जाता है. एंड इन द मीन वाइल ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, इट इज़ रिलीज्ड आउट फ्रॉम फीमेल बॉडी. ठीक है, तो एग का, hen का जो एग होता है एक्चुअल में उसमें डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है. धीरे धीरे वो एम्ब्रियो डेवलप करता है. फिर आपको पता है hen जब उस एग को ले करती है, रिलीज़ आउट करती है, उसके बाद hen उस एग पे 21 डेज तक उस एग पे बैठती है. उस एग पे बैठ के hen उसको वार्मथ देती है एक्चुअली. एंड बाय गिविंग वार्मथ व्हाट हैपन, इसके अंदर जो एम्ब्रियो है, इन द मीन वाइल 21 डेज में वो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा होता है, एंड फाइनली इट चेंजेस इनटू अ कंप्लीट फीटस. ठीक है, और जब 21 डेज पूरे हो जाते हैं तो उस फीटस की डेवलपमेंट पूरी हो जाती है, और तब वो एग फटता है, हैच आउट होता है, एंड द बेबी चिक कम आउट. सो वी कैन से दैट इन केस ऑफ hen फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, लेकिन फर्दर डेवलपमेंट जो है दैट इज एक्सटर्नल. तो जितने भी एग लेइंग एनिमल्स हैं ना, बर्ड्स हैं, ये आपका स्नेक हैं, उन सब में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है दैट इज एक्सटर्नल. So revise this topic carefully, children. That is sufficient for today. Thank you.